Hello students, we meet again today to read something new and very interesting. You must be telling why I always tell that things are interesting, this is interesting, that is interesting, which is more interesting. Why I say interesting is this, that once you think that it is interesting, then your interest will increase and you will receive more. Now, what did I say? Your interest will increase once you hear the word interesting. So, the same word I have used, interest and interesting, interest plus ing, interesting. So, ing is the moment you use the suffix ing, then it becomes present continuous. Okay, generally that is what we generally believe, present continuous. So what is my intention of speaking all these things? Do I speak something nonsense? No. I am to the point, because today we are going to learn something more or something about the tense pattern. You understand what is tense? The tense is controlled by or guided by the verb. Verb mane kon janicho na? Noun mane naming words, verb mane working words. This is what we know. So the verb, a verb controls the tense pattern. Khali setki hegala kon hegala? No. So let us start afresh. Not, or rather start fresh. English has English. I am talking about, we are reading English, right? It has got 6 tense. Are okay. So English has 6 tenses. Okay, plural, singular is tense, plural is tenses. Kintu tenses to tame kahibaku bhal laguni tense. Okay, so it has got 6 tense. Lekhila beloku tenses lekhiba. Okay, so what are these tense? Tame kahi pariba? Okay, let me try and take you through this particular topic today. Today's topic is tense pattern, and we know that English has got 6 tense. The first tense that you must be knowing from your school is the present. Present, eti hala past, eti hala future. Okay, present, past or future. Gote joke te asi nathala WhatsApp re or something like that. Fu tu ari re future kaibani future, future. Okay, so it is future. So there are three to कहली तपर फिर केमती 6 केमती हाला. Present also has present perfect, okay, past perfect and future perfect. एठी मैं गोटे जिनस तुमको कही रखुची दैट आमर जो फ्यूचर जो बोले कहते ना कि फ्यूचर टाको आजिकली माने फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, इट इज ए टाइम. ओके, तमें लिखला बेला को लिखिदेव जे इट हैज गॉट 6 टेंसेस. फ्यूचर साइड रे लिखिबो टाइम, फ्यूचर टाइम. फ्यूचर इज नॉट एक्जैक्टली अ टेंस, इट इज अ टाइम. So let us talk about the present first. Okay, present tense ta first re ame tike discuss kariba. Okay, because it is very interesting. It is again very interesting. Kana present mane amara jemte odia rachi gala kali, aji au asanta kali, tomorrow. Okay, so these 3
time is there से हिसाब रे हमर आसुचे past present future because it is aji so we will talk about present tense. First we will talk about the present tense. First jinsa about present tense is the simple present tense. First jinsa hochi simple present tense. What is a simple? Okay, simple mane sabu jo jinsa like easy heitevo na, it is not that. Plain. Over here simple meaning is plain, only ordinary present tense ta sangar kichi darkar nahi kete chitra bichitra. So what is present simple present tense? When you talk about habitual action, when you talk about habitual action माने सकाळ उठिकी दांत घसीबा गाधैबा, नो नॉट ओनली दैट, सबुदिन सकाळ उठिकी पाठ पढ़िबा, सबुदिन संध्या बेले खेलिबा, all these are habitual actions. This goes into simple present tense. Okay, simple present tense. So what this simple present tense is used to express? Taro kamo kono? What is the work, importance of simple present tense? Okay, एठी लिखुची. Okay, first jinsa hochi it talks about it expresses present truth. It talks about present truth. Truth for present truth kono माने आजिका दिन रे जो जिनिसटा होची सत, that is the present truth. Okay, केमती एटा हला? Supposing Sam is, एटा होची कोटेशन मु तुमको दउची, Sam is a tailor. बुझिला? सॉरी, एटा होची कोटेशन टा, माने कोटेशन माने मोटे एग्जांपल तुमको दउची. Sam is a tailor. Okay, Sam was a tailor yesterday, today he is a tailor, tomorrow also he will remain a tailor. ए जो सीक्वेंस रे, ए जो मीनिंग रे जो कथाटा कुआ जाए, that is called the that is called the present truth. Okay, it is the present truth, right? Okay, you understand it. आउ गोटे होची general truth. Okay, होची general truth. Okay, so general माने आर्मी रे जो general था ना general होची समस्त कर मिसे कि general सब गोटे. Okay, समस्त. Okay, so that is the general truth. So you will understand it if I give you an example of this. Water freezes at 0 degree. 0 degree Celsius. तुम जानते हो 0 degree Celsius. Okay, so तमें कौन भावुच एटा हूँ कोटेशन मार्क. सो तमें कौन भावुच जे वाटरटा आज 0 डिग्री रे फ्रीज करिवो, काली करिबानी कि काली करि नथिला. नो, इट विल हैपन. इट हैपेंड yesterday, it will happen today, it happens today, and also tomorrow the same thing will happen. So water freezes at 0 degree is a general truth. सबु काल पाई सेटा होची सत्य, सेटा होची general truth. So गोटे कौन छाड़ी देली कि present truth, present, general truth and simple present. Okay, so these are the three things. So all three functions कौन कौन है ना? habitual,
present and general truth. एतिक को नहीं करी माने ए थ्रीटा को नहीं करी आमर हला सिंपल प्रेजेंट टेंस, habitual truth, present truth and general truth. Okay, so these are the three functions. और ए तीनिटा जिनिस रे आमर आसुची the simple present tense. Simple present tense comes out of these three things: habitual, present, general, truth. Right? मैं लिखी दिला तो okay. Now I will remove it so that we can go to the next phase. एटा कौन किछि काम दोन एक्चुअली उडा को कपड़ा रे इन नथियो किछि इन्फेक्शन नथि ना आमे प्रेजेंट टेंस रू आमे फास्ट रे आमे पढ़ी देले फर्स्ट आमे पढ़िले सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके सेटा आमे फास्ट रे पढ़िले. ओके आ गोटे कथा another point we'll be talking about. Okay, adverb of frequency. adverb of frequency विषय मु तुमको कहीं करूची कहीं की कहूची. अच्छा adverb टा गोटे जिनस तुम देख adverb तो केते केते टाइप रो adverb थिबो. adverb रो गोटे टाइप रो adverb होची which speaks about which is related to time. time माने कोन जानि छ? time माने today, tomorrow, yes, always, forever, yes, and occasionally, never. मु लिखि दउची adverb रा कोन कोन जिंस उडा को अछि बोली मु तुमको लिखि दउची. always कहि सारछि तुमको, always, occasionally and never and usually and then often बहुत जन लोक कहती एटा को बहुत जन लोक often कहती often नहीं often and hardly ever. So एगुड़ा कहूची adverb which talks about frequency. frequency रो माने होची time. frequency over here is used in a sense of time. So this particular thing, verb of frequency, is used with the simple present tense. Okay, because कहीं कि तुमको कहली टाइम विषय रे because actions and events they happen in time. Okay, so time बाहर कौन से गोटे जिनस है परिबो कि time बाहर तो को जिनस है परिबो नहीं. So everything will happen within a particular time, and this particular time in English we call as adverb, which explains further a verb. a verb ता माने verb टा कौन हला ना गोटे हला होची action आ गोटे हला event. जे कौन से action हला कि जे कौन से event हला they will happen at a particular moment of time. Okay, so from there this particular time, this adverb is useful to explain to you what kind of a tense you are using, and this particular tense now is the simple present tense. Okay, तुमको आउ गोटे एग्जांपल देबी जे तमे माने समस्ते तमे माने all of you are science students ना. So I'll give you an example of that through chemistry. Okay, let us talk about a chemistry practical class.
Okay, let us talk about a chemistry practical class. तुमको टीचर कौन कहबे? Your teacher, practical teacher, will tell you this is a beaker. Okay, take a beaker. तापरे take some water, add some salt. In the continent. Okay, so now and once you add salt into that water in a beaker, then that salt dissolves. मोर कथाटा कहबार माने होची all these things that you read here in the chemistry practical class belongs to simple present tense. Got it? Okay. So मु तुमको वर्तमान कहूची को एरिया रे आमे सिंपल प्रेजेंट टेंस टा यूज करे. नंबर 1 होची मु तुमको खाली एग्जांपल पाई दउची हमर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास. ओके, सेकंड जिंस होची न्यूज़पेपर और कमेंट्री. कमेंट्री तुम देखिछ क्रिकेट कमेंट्री. ओके, तुम देखिथिबो ऑल द न्यूज़पेपर. तबरे न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली द हेडलाइन ऑफ ए न्यूज़पेपर से कौन कहतबो? टू ट्रक्स TRUC trucks collide COLLIDE. Two trucks collide. Okay, तापर इतने भीतर जिनस लिखिबा आई एम टॉकिंग अबाउट द हेडलाइन ऑफ ए headlines of a news item. से न्यूज आइटम रे कोन होइची से माने लिखिबे two trucks collide, two boys competed with each other to win the swimming competition and both of them scored the same marks. Okay, so this is newspaper headlines and also commentary. Oh, he's running, he's there, he has come over here. हमको समको करी तुमको दौथबे कमेंट कहारो ना क्रिकेट रो कमेंट्री दौथबे. Okay, so this is two uses. See, these are two uses of our present tense टा हला, simple present tense टा मुली बेउची. हां तबरा मु जीवी थर्ड यूज माने आमे तो जानिया को चाहूचे आमे माने खाली तो मु तुमगोटा आंबडे धरे देली तुम आंबडा नेकरी कोन करबो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ द आंबो. तापरे मु तुमको कहली तमे ताको एम्प्टी करो और खाओ. दिस इज अ फूड एंड इट इज और ए फ्रूट एंड इट कैन बी ईटन. That is the way it is taught to the children when they are very small by the parents. They are taught like that. I am telling you in what are the different areas in which the language that is used are called simple present tense. So these are the two things. So now mu tuमको कहिथिली आ गोटे जिंस होची प्रेजेंट रे प्रेजेंट पार्टिसिपल. मु तुमको कहू नाही जतिके कहूचे सेतिके रे भाबिबो आ गोटे आगो को जाई के मते क्वेश्चन पचारोनी. जेतल क्वेश्चन पचारबो टाइम आसीओ मु तुमको समय देबी. यू विल आस्क क्वेश्चन. सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल माने आईएनजी फॉर्म. एटा होची तमरो आईएनजी फॉर्म. आईएनजी माने कम कमिंग गो गोइंग आईएनजी सेटा आईएनजी फॉर्म कोंती सेटा हला पार्टिसिपल. सो ए फॉर्म रे द वर्ब टेक्स आफ्टर takes a form of auxiliary माने be verb माने am are is am are
these are the three auxiliary. So when you are using present participle form, which is an ing type of verb, केवल verb भी नहीं परिबो तमरो ing हला तमरो noun रे राम इंग कहि परिबो कि ना go ing कहि परिबो. So verb takes the ing form, right? So सेतेबेले कोन हेछि जेतेबेले से participle form टा हमें यूज करिबा पई we will try at that particular moment we will need an auxiliary verb and a helping ता नाटा auxiliary रो आ गोटे ना भी होछि helping verb. Helping verb टा होछि is am are आउरी अछि हमें will discuss it later. First is am are होछि तमरो overall होछि तमरो auxiliary form. Example ala, the boys are playing cricket. Okay, the boys are playing cricket. Okay, so eta hala present participle. I'll be talking about past participle. Okay, माने मु जते बेले तुमको कथा कहूची participle रो, remember this, the most important aspect of a participle is the ing form. Okay, this ing form will need am are is am are बुझिलो. ओह is टा को आगो नि आसीबा. Okay, is am are এই তিনটা auxiliary is required to, or the helping verb is required to make a sentence grammatical, right? So now we will go over to past participle. Participle कहला माने ही तुम्हारो ing form टा हबो. ing has to be there and auxiliary has to be there. सुनि परछो तो ing participle माने ing, whether it is past, present or any other thing, it has to have ing form. ing form will need तमरो requirement रहिला जे तुमको गोटे auxiliary और helping verb दरकार अछि. helping verb टा होछि is am are. खाली सेति कि नुहे एई is am are टा जेतबेला हमें past को पळे आसिले से आउ is am are आउ रहिला नाही. सेतेबेले सीए हे गला has, have, had. is am are टा एटी हे गला has, have, had हेला. Clear na? Okay, very good. Example, the bell माने कॉलेज के स्कूल रो bell. The bell had rung for 5 minutes. Okay, so now present tense रो आ गोटे सिंपल प्रेजेंट टेंस रो आ गोटे फॉर्म अछि सेटा होछि टिके लिबौछि. हां मु तो लिखुछि संगे संगे लिखि नबो हैला. तमे संगे संगे लिखि देबो त तमन को किछि असुविधा हबने. मु त लुभेई देबी. सो देयर इज वन मोर फॉर्म जोटा होछि टू माने कोन जानि छ तो टू प्लस infinitive. Infinitive ta kono, I think that we have got that particular in our second year course. Okay, so now it does not, this to infinitive, it does not express tense. So it only is used to express various meanings, various meanings, right? I
want to buy a pen. ए पेन गुड़ा भलो चलुनी तो बर्तमान so I want to buy a pen. I want to buy a pen. To I want to plus infinitive. Okay, আজি हो काली हो परदिन हो I want to buy a pen. Okay, तापरे I would example, give me something to drink. Okay, to drink. Okay, to infinitive. एटा होची आ गोटे फॉर्म. सो मु तुमको पास्ट पार्टिसिपल कथा वर्तमान कहूची ना, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, इन मोस्ट English verb you find that the past tense and past participle, past tense and past participle. So ei jaga re mu jo nuata katha la kahuchi tom manan ko, they have to use a d or ed, d or ed. mu example dauchi, act act, acted. गोटे होची live, lived, etc etc. Because it is past tense, they will take either a d or an ed. Okay, so आमे एठी गोटे जगह को जिबा. मु एटा टी लिभौची, लिभे कि तुमको दि चारटा खंडे एग्जांपल देबी वर्तमान. Present, past, future, past participle. Okay, am, watch, been. I have been a good sportsman, you can say. आजिकली तो man और woman कहूना ना, समझते man को चुनी, नले person को चुनी. I was a good sports person. Okay, so I have been a good sports person. Am, where, was, and been are where. Been माना जोड़ा छुई जो खाते इस been छुई नहीं है. Been. Okay, bear, bore माने tolerate करिवाटा. And born, born, born. Eat, ate, and eaten. Okay, तमने past participle रे जो d form टा use हुए, जेमती हमें be verb माने is, am, are कहले, सही टाइप रो d form टा it is taking different changes. Turn as per the requirement of that particular sentence. But particular sentence depends for its meaning on the verb. The shape of the verb will change from time to time as for the requirement of the meaning of the sentence. Present, past, future. Okay, present, simple present, participle, past participle. Okay, so the next point is तुमको first रे कहली, a sentence depends upon a verb to complete its meaning. Supposing mu कहली जे I am what? I am what? I am teaching. I am eating. I am dancing. All these words. Okay, so all these are verbs. Verb जदि न हबो ताहले sentence टा
complete hey paribo nahi. Most of the time exceptions are there. I am not talking about exceptions now. So this is the main format. So verb sangare adverb thai, noun sangare adjective, verb sangare adverb. Okay, so this adverb, some adverbs, some adverbs which are frequently used with verbs are, in the present simple tense. Present simple tense a porjanta we are discussing, and these adverbs should be along with the verbs, they should be in the simple present tense. The boys always play football in the evening. Okay, so like that we can have many examples of this. The boys always, okay, play cricket in the afternoon. I seldom go to cinema. बहुत example आसी पारिबो. So ए जो adverb गुड़ाक which were frequently used with verbs, these adverbs which are frequently used with verbs are called, को जगह लिखी adverbs of frequency, QUNCY, adverb of frequency. And तार काम कौन, what is his work, आमे जानी गले, तार ना गाँ ठिकाना आमे जानी गले. Okay, what is his work, what is the work of this adverb of frequency? Once it expresses habits, तमे गोटे कामटा जदि frequently करूथबो, it becomes your habit. Okay, सखाळु उठिकरी तमे सबुदिन जदि दांत घस, it is not a question of habit but it is a question of cleanliness. किंतु तुम सबुदिन सकाळु उठिकरी जदि मिल्क पिउछ, that is your habit. मिल्क न पीके जदि चा पीलो, that will be your habit. मिल्क चा जदि किछि न पीके संगे संगे जाइकरी भात डाली तरकारी सब खाइ देलो, that will be a habit. Okay, so frequently used कामटाकू आमे कहूचे adverb of frequency, and it speaks about a person's habit. Okay, the second is भूल कर दूची. नेक्स्ट आमे पढ़िबा, मु तुम पढ़ेली simple present tense. Okay, now present continuous. Okay, present continuous टा कौन? मु फर्स्ट तुम एग्जांपल दे देबी, तापर तुम निजे मते बतेबो what is the underlying rules. My father is reading a novel. The boys are watching a cinema. Okay, full stop दाओ भूलिबनी, हला गोटे full stop double S हला. Okay, so now see this. So
ये जगार इज रीडिंग आर वाचिंग एटा होची प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने कौन ना वर्तमान एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट तुम धर कर आई एम टीचिंग मु कहि परबी आई एम टीचिंग नाउ बिफोर द कैमरा आई कैन कहि पारे कहीं ना एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एम डूइंग दिस थिंग एई समय आज वर्तमान एई क्षणिका जो कामटा करा जाए दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस गॉट इट ओके एटा है गला तुमको कहीदेली तार स्ट्रक्चरटा तार फॉर्मटा है आम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इज आम आर तो तुमको कहली आ कौन इज आम आर हूँ ऑक्सिलियरी वर्बटा जोटा जीव आईएनजी सांगरे ओके सो दिस पर्टिकुलर टेंस present continuous tense is used to express action or events. It expresses action or events that is going on at this particular moment. एई समय जो घटना गुड़ाक घटुची जो काम तमे करूचो that is called the present continuous tense. Okay. So action or events which are in progress at this moment. Okay. at this particular moment रे तुम जो कामटा करूचो सेटा को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोली कहती सो सेकेंड रे मार्केट मु तुमको कौन कहली जे प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने एबे एबे जो कामटा तुमे करूचो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस मु कथा कहूची तमे पाठ पढ़ुच एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओके आउ गोटे जिनस अच्छी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट विथ ए स्लाइट डिफरेंस एंड व्हाट इज दिस डिफरेंस लेट अस सी ही मु तुम एग्जांपल देकी तुमको फर्स्ट बुझेगी ही इज practicing yoga these days. He is practicing yoga these days. I am reading तमे कहबो I am reading +2 साइंस आर्ट्स कॉमर्स तुम जहाँ भी पढ़ु चाहो ना कहीं तमे कहबो जे I am reading +2 साइंस. सो तुम जो कहूच आई एम रीडिंग +2 साइंस बोलिकी से कौन तुम एने पढ़ुच कि यही क्षणिका पढ़ुच कि नो द वर्क स्टार्टेड योर रीडिंग एक्टिविटी इवेंट एक्शन स्टार्टेड द डे यू टुक एडमिशन एंड इट विल कंटिन्यू टिल यू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन राइट अंडरस्टूड. सो गोटे कामटे पास्ट रु आरंभ करके वर्तमान टू जाइकरी फ्यूचर पर्यंत चलिकरी जीव. ओके सो नाउ दैट इज ए डिफरेंट एंगल टू दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. there are two classes of verbs which are rarely
used eta sarla ha there are two classes of verbs which are used which are rarely used in present continuous तमें शुणी गोटे एडवर्टाइजमेंट ये जो मैकडोनाल्ड ओके बर्गर गोटे खाऊची खाऊची आ से कहूची आई एम लविंग इट ओके सो दिस बर्गर आई एम ईटिंग एंड आई एम टेलिंग आई एम लविंग इट नो तमें ये तुमर से कौन कहती ना आर्टिस्टिक लाइसेंस पोएटिक लाइसेंस बट पोएटिक लाइसेंस तुम्हें नहीं पार ना परीक्षा खातार यू हैव टू राइट करेक्ट इंग्लिश आउ से जगार आई एम लविंग लव पर आईएनजी लगे पारिबो नाही लव पर कहीं आईएनजी लगे पारिबो नाही बिकॉज से जो कहली देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स टू क्लासेस क्लास माने ये जो +2 फर्स्ट ईयर +2 सेकंड ईयर नुए टाइप्स ऑफ वर्ब्स से माने आईएनजी फॉर्म रे जनरली से माने को निया जाए नाही बिकॉज से माने होचंती इनर्ट INERT इनर्ट वर्ब से माने इनर्ट माने इन एक्टिव दिस वर्ब्स से माने वर्ब ओके दे आर वर्ब्स बट से माने करो काम करिवार शक्ति नाही ओके सो कहीं काम करिवार शक्ति नाही आमे जमती पिला दिने गोटे जोक कहउतले को घड़ी अचल को घड़ी आई एम फॉरगेटिंग ए टाइप गोटे कहती से टाइप गोटे कौन जोक थिला आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट ओके कौ गोड़ अचल अचल कि कौन बोली कहती ना घंटार गोड़ एमती टाइप गोटे था गोटे जोकटे ओके सो से टाइप से काम भी करुथबो आ अकामी भी थी एट द सेम टाइम इट इज अ वर्ब बट इट इज a useless verb or a verb without having the capacity to work. Love is that kind of a work. I love it. So love is a work over here, but at the same time you see that love feel एगुड़ा को सब काम नुहे ओके मु फील मु एमती चिमटिला को आई फील पेन फील करुच्ची कि मोर ये फीलिंग टा किसी काम करूनी काम कला माने जाकर इट विल बी ए वर्ब ऑफ एक्शन अदरवाइज इट विल बी एन इनर्ट वर्ब ओके सो को माने इनर्ट वर्ब रहिले जे verbs expressing activity of mind. I am thinking. I think. Whatever it is, think is not a verb. It is not a work. Okay, it is a work, yes, but it is an inert verb. It is a verb without. It is an inactive verb. Okay, senses, mind, senses. Mane I am loving it. No, you cannot loving it. It is love. Okay, feeling. Okay, एमिति बहुत गुड़े जिनस अच्छी admire, forget, hate, love, imagine एमती केते गुड़े verb अच्छी which are inert verbs. You should know that these are the inert verb and you should not use ing after that. आ गोटे एटा हला एक रे दुई रे हला जे verb expressing a state of condition which are regarded as permanent NENT permanent. Okay, so verb which expresses
it talks about a work, but this work has got a permanent value, like appear, value, own माने काहाको पोजेस करिबा. I own a pen. Okay, मो पाखरे गोटे पेन अछि. Okay, so these verbs we use as simple present and not present continuous. ओके, ये जो वर्ब गुड़ाक मु कथा कहली फीलिंग्स एंड सेंसेशन एंड इमोशन विषय जो वर्ड गुड़ाक कथा कहूब, वर्ड माने वर्ब गुड़ा कथा कहूब, दे विल बी कॉल्ड एज इनर्ट वर्ब, एंड बिकॉज दे आर इनर्ट वर्ब of sensation, of perception, of emotion, all these things they cannot take an ing because they are inert verb. तांकर गोड़ो नाई कि हाथ नाई, समाने किछि काम कर पारिबे नाई, सेथिला कि समाने हेले ओकामी verb, but okami verb. Okay, kind of a confusing thing, verb and not verb. Okay, सेमाने कौन करिबे ing verb नहीं पारिबे नहीं, सेमाने just simple present, they will be simple present. आ गोटे फॉर्म तुम्हें देखो वर्ब रो, sorry. When an actions see or happens gradually. Okay, the patient is slowly recovering. Okay, the patient is slowly recovering. Slowly recovering माने काली भी रिकवर करतुला, आज भी रिकवर करछे, काली tomorrow also recover करिबो. So this recovery is a slow process, a continuous process. Okay, so now ए जगह आमे also we can use simple present. तापर आमे we come to present perfect. तो मु लिखि दिली फर्स्ट रे present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कौन देख दिए एग्जाम्पल देख, मिस्टर दास has built a house, built a car. हाउस कहीं है, कार कहीं है, कहीं जानी पड़ली, कार मते भल लगला. ओके, he has built a car. ओके, इंजीनियर. ओके, मिस्टर दास has written a book on car. Okay, मु फुल स्टॉप दबा भूल जाउची, तुमे भूलिबनी. फुल स्टॉप दबा, फुल स्टॉप परे जो लेटर टा आसीबो सेटा कैपिटल लेटर हबो. तम जोठी नाउन आसीबो माने ना आसीबो सेई जगह ना नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स नुवे ना, लाइक मो ना तम ना गुड़ाक सब कैपिटल लेटर हम. फुल स्टॉप पर जो लेटर आसो से कैपिटल लेटर हम. ओके, रिमेंबर दिस. सो नाउ यही जगह आम कहवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी. हैज बिल्ट, हैज रिटन. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट माने परफेक्शनिस्ट से दृष्टि देखनी. ओके, सो नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कहीं से काली ठू आरंभ करी से गोटे बहीटे लिखि सारी. ही हैज रिटन ए बुक, ही हैज रिटन ए बुक. से काली लिखिंट कि आज कंप्लीट कर लिखि सारा पर से बहीटा उभे जीव कि
If somebody has built a train, supposing a train has been built by Ram, so in that case this train is not going to vanish tomorrow. It was built yesterday, it is there today, even tomorrow it will be there. So this particular continuous process जोटा कि एका संगरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एका संगरे कंबाइन करूची, दिस इज कॉल्ड ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, ता संगरे आउट अछि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ए जगह देखो, आई एम रीडिंग +2 साइंस. काली पढ़ुली, आज पढ़ुची, टुमोरो परीक्षा न सरला पर्यंत +2 पढ़ी, +2 पढ़ी सारा पर आई विल डू समथिंग एल्स. ओके, सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट पास्ट समय पास्ट परफेक्ट and past perfect continuous. past perfect continuous. So past perfect रे होची when we reached the station, the train had left. Okay, so I have been reading in a village school. Okay, this is this and this is this. So what is the difference is this, that past perfect way the verb is had plus past plus participle. किंतु past perfect रो होची what is this, मु काली भी पढ़ुली, आज पढ़ी, and tomorrow also I will continue to read. So this particular sense, it expresses action which lasted for a long period, period of time. Okay, बेसी समय धर कि जो जिनसटा को चले माने 2 वर्ष तुमको पढ़िया पड़ो +2, काली आज आ पहर दिन पढ़िबो, सेटा को होची तमर होची that is called the past perfect continuous. Okay, so now we are going to read about the future. I have already told you FUTURE is not future, it is future. FUTURE is future. Okay, future is only for joke. So we are going to read about future tense. Oh, we are not going to call it tense, rather we call it time. Future time. There is nothing called a future tense, it is a future time. Excuse me. So English verbs don't have a future tense. They don't have future tense, they have a future time. I shall arrive, SHALL, shall, ARRIV, at Delhi. समय सॉरी गलानी तो तरतर हो जाउछ. At Delhi, the day after tomorrow. Okay, so हे गले गे आ गोटे मिनिट खाली. ओके, ए जगह कौन होची I shall, गोटे इंटरेस्टिंग जिनस तुम देख,
shall ଆଉ will ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି I am just giving you a hint about the future. Future रे आमे कौन करे future tense रे we use shall and will. I shall go to Cuttack ମୁଁ ଯିବି. But the moment I say I will go to Cuttack माने definitely ଯିବି. I shall go to Cuttack ମୁଁ जाइपारे न जाइपारे. Will I will go to Cuttack is sure. I will surely go. I. Okay. And he third person singular number. जेते बेले तुमे फर्स्ट पर्सन लगाउछ shall लगेबो. I shall do, I shall eat, I shall go. किंतु तमे जेते बेले गोटे जिंसटा श्योर हे जाउछ ऑर्डर करूछ सेते बेले ए shall टा तमरो will हे जिवो आउ ही टा ठीक उल्टे जिवो. जदि श्योर हे गला ऑर्डर हे गला किंबा गाली दिया हला से माने will टा he shall हे जिवो. Okay. So now we have talked about three types of tense: present tense, past tense and future time. So present tense is the most important thing because it is happening at the moment, and then past जहाँ future जहाँ present रे पढ़िलो सेटा is in the past. खाली future रे आमे जो shall और will रो use टाको आमको भल्लो करी जानिबा पाई पढ़िबो. So that is all. Try to read it attentively, diligently, and all the best. Thank you.